Okay. Now state two differences between synthetic and natural fibers. Yes, Rashi. How will you differentiate between a synthetic and a natural fiber? आप उनको कैसे distinguish करोगे? Yes, beta. Yes, Rashi. Give any point, beta. Any point, be it wrong, be it right, doesn't matter, but at least give it a try. Yes, beta. देखो. Ma'am, natural fibers, so the fibers which are made naturally with the help of plants and animals, and for synthetic fibers, the fibers which are made in the factories and are man-made. So for example, for natural cotton and wool, and synthetic rayon and polyester. Yes. Okay. Manan, any other point? Ma'am, natural fibers are biodegradable, so they do not harm the environment. Yes. Whereas ठीक है राशि? synthetic fibers harm the environment. Yes, very good. तो ये हमारा हो गया obtained from plants and animals, और ये हो जाएगा they are made in factories और labs. Okay, laboratories लिख देते हैं. चलो. Next is बेटा they are biodegradable and these are non-biodegradable. Okay. और राशि आपने एग्जाम्पल दिए थे बेटा, इसमें क्या आएगा? कॉटन, राइट? कॉटन. और सिंथेटिक के लिए आपने क्या एग्जाम्पल दिया था? रेयन. Rayon. यस, वेरी गुड. चलो, अब वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा वैसे आई स्टार्टेड अप विद द क्वेश्चंस. आई डिडंट टेल यू कि व्हाट वी आर डूइंग. We are basically doing the question answer sheet of perfect science of the chapter synthetic fibers and plastics. We had covered our objective questions in the previous class only. Now we started off with the short answer type questions. Now question number 2 is what is a polymer? Yes. Polymer क्या होता है? Can I tell? Sure beta. So, ma'am, a polymer is a natural or artificial chemical compound consisting of large molecules. Okay. Yes, it is a substance which is made by joining, a large number of small repeating units. ठीक है? Joining a large number of repeating units. और उनको हम क्या बोलते थे बेटा? Repeating units को called, yes, monomers. Okay, it is called as monomers. ठीक है? Monomers को जब आप बार बार repeat करते हो तो आपको एक polymer मिल जाता है. Now tell me what is rayon made of? Rayon किसका बना होता है बेटा? Ma'am, rayon is made up of wood and cellulose. Yes, cellulose very good. fiber. Very good beta, very So good. it feels like natural fibers like wood and like wool and cotton. Yes, it is made up of cellulose found in wood pulp. Very good, Rashi. Okay. Now the next state, 2 uses of rayon. Yes. अब मुझे rayon के uses कौन बताएगा? Yes. Rashi, you tell. Manan, you tell beta. 2 uses of rayon. Rayon is a cheap as compared to silk, but has the same texture. No, I'm not talking about the uses or advantages. I just wanted to ask the uses. Like इसको आप as dress material use कर सकते हो. Then हम इसे surgical dressings बनाने के काम में लेके आते हैं, right? इसके अलावा कोई point याद है? Yes, ma'am. Can I tell? Yeah, sure, beta. Ma'am, it is used in medical field for making bandages and Yes. is used for making bed. Yes. Now, tell me 2 properties of nylon and 2 uses of nylon. ठीक है? पहले आपने मुझे properties बतानी है, उसके बाद उसके uses बताने हैं. Yes, बेटा. पहले properties बताओ क्या होती है nylon की.
What are the properties of nylon? Yes बेटा, strong होता है. It is strong fiber. Yes, Okay. Or thread of nylon is stronger than a thread of iron. yes. Then or wrinkle free होता है, right? Or Ma'am, dries easily. yes, dries very easily. अब राशि मुझे uses बताएगी. Yes राशि बेटा, what are the uses? आप इसको नायलॉन को किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो बेटा? Ma'am, for making carpets. ओके, कारपेट बनाने के काम में तो नहीं लेके आते हैं इसको, हम रोप्स बनाने के काम में लेके आते हैं, राइट? Yes, ma'am. Ropes. नेट्स, Rope. जो फिश नेट्स होते हैं या कोई भी नेट होते हैं उसमें बनाने के काम आता है. और जो बनते हैं ना आपके जैकेट्स या स्लीपिंग बैग्स, राइट, जो थोड़े से शाइनी और स्लिपरी से होते हैं. ओके, चलो कोई बात नहीं. नाउ यू हैव टू टेल मी state two important properties and two uses of bakelite. अब bakelite की आपने मुझे दो properties बतानी है और उसके uses भी बताने हैं. Yes बेटा. Ma'am, bakelite is used to make switchboard, switchboards. Okay. Okay. And is used in making fry pans and kitchenware. No. Kitchenware is melamine बेटा. Bakelite के uses मैं लिख रही हूँ. Okay. आप लोगों ने पहले uses बताए हैं. For switches, ठीक है, handles बनते हैं बेटा उससे. ठीक है राशि, जैसे आपके प्लग्स हो गए, हैंडल्स हो गए, ये सारे आपके बेकेलाइट से बनते हैं. प्रॉपर्टी क्या हुई? प्रॉपर्टीज ऑफ बेकेलाइट. यस बेटा, यस टेल मी. अरे कैसा प्लास्टिक होता है ये? थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, कैसा होता है? Ma'am, can I tell? या श्योर. So, ma'am, bakelite has a number of important properties. So, the first one is it can be molded very quickly, decreasing production time. Moldings are smooth and retain their shape and are resistant to heat. Yes, they are thermosetting plastics. ठीक है, they are very poor conductor of Ma'am, electricity. and prices for low conductivity. Conductivity. So they are very poor conductor of heat and electricity. Yes, ma'am. Manan, now tell, state two disadvantages of using synthetic fibers. Synthetic fibers are not biodegradable, so they harm the environment. Okay. Ma'am, and forming them petroleum is used to make ठीक है, them. हमने पहला पॉइंट तो लिख लिया. एक मिनट मनन. So नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए. Ma'am, हाँ जी. so ma'am, most fabrics made from synthetic fibers can catch fire easily. Yes, very good. They Most fabrics made from synthetic fibers require careful ironing as they melt easily. yes, catch fire easily. Very good. Now what is rayon? How is rayon made and state uses of rayon? अब I think ये आप question कर पाएंगे, right? Now describe in detail differences between thermoplastics and thermosettings. अब ये बताओ question. हाँ जी बेटा जी, अब ये क्वेश्चन बताओ मुझे. पहले थर्मोप्लास्टिक के पॉइंट्स बताओ. हम यहाँ पे लिख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, राइट, और यहाँ लिख लेते हैं थर्मोसेटिंग्स. हाँ जी, So ma'am, can I tell? या श्योर. पहला पॉइंट बताओ. बेंट इजीली. Ma'am, the thermoplastic, the polymers whose shape can change on application of heat and pressure are known as thermoplastics. Yes. And thermoplastics have weak forces of
interaction among chains. They do not bend easily, thermosetting wale, and they don't get soften up, Yes, ma'am. right? Right, ma'am. Okay. Next क्या difference होगा बेटा? उसमें linear arrangement होता है, right? If you remember, उसमें आपका linear arrangement of वो होगा polymers रह गया है ना? तो ये क्या होगा? Linear polymers हैं ये. और ये क्या होता है? Yes, Cross. ma'am. Manan, next point. Okay. Ma'am, thermoplastics are soft, can be bent easily. They can be remolded. Yes, ma'am. Ma'am, thermosetting plastics cannot be remolded. Yes, they can't be remolded. Ma'am, and thermoplastics, they हाँ जी और thermoplastics, राशि मुझे थर्मोसेटिंग का एक एग्जांपल दो. and थर्मोसेटिंग they का are recyclable, but Ma'am, for thermosetting, melamine. yes, very good. Next, Okay, मैंने आप okay, बताओ ma'am. what properties of plastic make them the material of choice. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें उसको चूज करने के लिए मजबूर कर देती हैं? ma'am, plastics are lightweight. Plastics are light in weight. Yes, very good. Next, Ma'am, they can be formed into any color. yes, any shape, any color. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भूल रहे हो आप. Ma'am, plastics are corrosion resistant and Yes. chemical inert. Very good. Any shape और size. और ये क्या हो जाएगा? They are corrosion resistant and they are inert. ठीक है, तो आप इसमें कोई भी चीज स्टोर कर सकते हो, right? Okay, okay, ma'am. Inert मतलब they don't react. Okay, now tell me the advantages of plastics. तो काफी हैं. Ma'am, can I tell? क्या बताओ बेटा? Ma'am, number one, they are light in weight. Number two, it can possess very good strength and toughness. The third one, plastics are corrosion resistant and are chemically inert. Yes. Strong, they are strong, good and cheap to produce. Yes. They can use for building, construction, electronics and transportation industries as well. Okay. So it can be reused and restored over again and again. Yes. Very good water resistant and poses very good water capacity. वो तो चलो हम किसी के भी बना सकते हैं, right? Okay. Now why should we minimize the use of plastic? आप कैसे minimize करो? हमें क्यों करना चाहिए minimize? Ma'am, to reduce plastic, so we should not use plastic frequently. We should use the plastic again and again. Plastic is basically non-biodegradable. So it is not at all Yes, degrading. So it is there on the earth, posing a lot of problem for the humans as well as other animals. They pose a health threat to the animals, right? हमारे लिए भी काफी threat है. Soil pollution cause कर रहे हैं, water pollution cause कर रहे हैं, तो वो problem हो जाती है. Now, okay. I'm sorry. Today I didn't have a cup of tea. So, okay, tell me, how can they minimize the use of plastic? आप कैसे उसको minimize कर सकते हो? By using the 3 R's. Yes. Yes, ma'am. क्या थे वो? Reduce, reuse, reduce, recycle. Yes. Yes, Manan. Last आप बताओ. Manufacturing synthetic fibers helps in conservation of forest.
Yes, beta. No, ma'am. How it prevents? Natural fibers जो हैं वो क्या है? The natural fibers हमें कहाँ से मिलते हैं? Information. नेचुरल फाइबर्स के लिए आप क्या करते हो? प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हो? प्लांट्स पे डिपेंड करते हो? Ma'am, can I tell? क्या श्योर बेटा? Ma'am, the natural fibers require raw materials from plants and animals, so they lead to cutting trees, which is known as deforestation and killing of animals. Synthetic fibers are made up of synthetic chemicals, and these chemicals are not available in the forest. So manufacturing synthetic fibers is Yes. actually helping Yeah. conservation of बिल्कुल ठीक forest. है. When you have to get the natural fibers, obviously you will wipe off the plants from which they are, they are getting. Yes, ma'am. तो आप उससे क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होनी शुरू हो जाएगी, एनिमल हैबिटेट डिस्टर्ब होता है, प्लांट हैबिटेट डिस्टर्ब होता है. तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? जो फॉरेस्ट है they'll start shrinking, वो shrink करना शुरू हो जाएंगे, राइट? तो इसीलिए आपको Yes, ma'am. हाँ जी, इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप सिंथेटिक अगर फाइबर्स बना रहे हो, so that will be quite helpful. Okay, explain why shortage of acrylic needs no special care, storage of, sorry, unlike woolen clothes. Yes, acrylic को एक स्पेशल केयर की जरूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि सिंथेटिक, राइट? पेस्ट फ्री होता है. पेस्ट फ्री है, कोई इसमें पेस्ट नहीं लगता, राइट? और क्या पॉइंट हो सकता है बेटा? यस, मॉइस्चर रिटेन नहीं करता, तो उससे भी इसके अंदर Yes, फंगस ma'am. का डर नहीं रहता. ठीक है, मॉइस्चर रिटेंशन जो है वो काफी लेस है इसके पास. दैट इज, अब इन पॉइंट्स को ना आपने एक्सप्लेन करके लिखना है. हम तो सिर्फ इस में सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ओके? बट यू हैव टू राइट इट थॉरली. Why do synthetic fibers Yes, ma'am. generate static electricity? So, ma'am, synthetic fibers are made up of chemicals consisting Yes. of long chain molecules that Right. have lots of loosely bound electrons on the outside. It is these loosely held electrons that get rubbed off and stick to the materials and form static electricity. Very good. Production from chemicals. अब जो chemicals होते हैं, they have got electrons, right, in the form of free ions. जब वो rub होते हैं किसी और surface के साथ, तो they get discharged, leading to the production of static electricity. Yes. Very good. Okay, so with this we finish off your